So today we are going to see topic under functions, that is with return type and without parameters. It means एक फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा बट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? So it will be like this. Example is int main empty bracket. So a function with the name main, it is not accepting anything क्योंकि ब्रैकेट खाली है, but the function is returning something. It means the value returned is integer. एक function integer return कर रहा है. So we'll take the same example what we have taken in the last session, that is simple interest. So let me clear this. So we'll take the same thing. अब एक अपने पास में function है. Let's take int main because this is the entry point of the code. और एक अपने को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन नेम simple interest. Now what we are saying is the function will not accept anything. It means the receiving parameter of the function will be empty. फंक्शन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ब्रैकेट क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, राइट? अब अगर ब्रैकेट खाली है तो फंक्शन के पास डेटा आएगा क्या? नहीं. और अगर ये फंक्शन के पास डेटा ही नहीं आएगा तो हाउ द फंक्शन वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. एग्जांपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये करना है. But if you do not have principal, if you do not have rate, and if you do not have time, how you will calculate it? So this is not possible. This is not possible. So how we will accept the data? So the data must be accepted inside the function. जो अपने फर्स्ट टाइप में देखा था फंक्शन के कि फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, तो फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो फंक्शन को एक्सेप्ट स्कैन करना पड़ा पैरामीटर्स. In this case also main is ready to give the data to the function. For example main में अगर डेटा स्कैन कर भी लिया और मेन रेडी भी है फंक्शन को डेटा देने के लिए, बट द फंक्शन डू नॉट रिसीव एनीथिंग, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं. और अगर फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं. सो वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन. सो डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, प्रिंसिपल, rate and time, right? We also have to scan these value inside the function. So it will be printf. I will only mention like this, enter 3 values. Ideally you must give it like this, enter principal, enter rate, enter time, like this, but I will just mention enter 3 values and I will scan these 3 values. So scanf, to scan the values 3 float scan करना है तो 3 बार %f. The first value needs to be stored in principal, so address of principal. The second value is address of rate, and the third value is address of time, right? So we have all these 3 values scanned. Now we have these 3 values, so we can calculate it, the simple interest, right? So to store the simple interest we also have a variable si where we'll store the output, and I will write like this: si is equal to principal into rate into time divided by 100, which is the formula for calculation of simple interest. Now the simple interest gets calculated and it gets stored in SI, right? Now ideally in the first part, even in the second part as well of the function, we have printed the output inside the function itself, right? So we have scanned the values. We have in the first type of function, we have scanned the value inside the function, we print the output inside the function. In the second version of a function, we accepted data, right? But then we do not have to scan it because we already have the data in place. Now we just have to calculate and print, right? In the third format, now since we do not have any receiving parameter, it means function ने receive तो कुछ नहीं किया है, तो data कैसे आएगा? So we have scanned this data like this. Data scan होने के बाद we have calculate the output. Now in this case the function is ready to return, so we have a keyword return. And what we where is the output stored?
it is stored in SI. So I will return SI. So this is how a return is placed. Now what we are returning? SI. What is the type of SI? It is float. So here we have to mention float. तो इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जिसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्सेप्ट क्या करता है? कुछ भी नहीं, बिकॉज रिसीविंग पैरामीटर्स आर ब्लैंक. और वो फंक्शन रिटर्न क्या करता है? फ्लोट. और फ्लोट क्यों रिटर्न कर रहे हैं? बिकॉज मेरा आउटपुट किसमें स्टोर हुआ है? फ्लोट में. तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा? फ्लोट. Right, so we are returning SI because the output is stored in SI, and what is the type of SI that we have to mention over here. So this is known as return type of the function. Right, now the function is completed. So we do not have the data in the receiving parameter, so that's why we scanned it inside the function. We calculate the output inside the function, and the function we do not print. In this case we are not printing the output inside the function, but in place we are returning the output. So we'll first talk about this return part. So what is this return is? So it is a keyword in C. This keyword must be the last line of your code, because after this return keyword, whatever you are writing, right, if there is some code below this, so this code will never going to be executed. And why it will not going to be executed? Because from the return keyword the control will go back to it will go outside the function. It will terminate that function at that particular point. तो इसके नीचे जो भी कोड लिखा रहेगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दैट्स वाई दिस रिटर्न लाइन मस्ट बी द लास्ट लाइन ऑफ द कोड. जहाँ आपका कोड पूरा तरीके से कंप्लीट होता है, एट that particular point you have to mention the return keyword, right? If in case if you are writing something below the return keyword, then that code will become unreachable code और वो चलेगा नहीं. This is the first thing we have to keep in mind. The second thing what we have to keep in mind is you can only return a single value from the function. So multiple return values are not possible. And here also where I am making this arrow, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वहाँ पे भी सिर्फ आप एक ही रिटर्न टाइप मेंशन कर सकते हो. आप कॉमा कर करके बहुत सारे रिटर्न टाइप मेंशन भी नहीं कर सकते हो और रिटर्न कर भी नहीं सकते. तो कितनी वैल्यू रिटर्न हो सकती है फंक्शन से? ओनली वन. रिटर्न टाइप कितनी लिख सकते हैं? ओनली वन. और क्या लिखोगे? जो रिटर्न के आगे आपने लिखा है वही रिटर्न टाइप में आएगा. तो रिटर्न क्या कर रहे हो? इफ यू आर रिटर्निंग इंटीजर you have to write down int. If you are returning float, you have to write down float. If you are returning character, you have to write down character, or whatever. If you are returning something x, then you have to mention the x type over return type in place of return type. Fine. So there are, this is not at all complex. सिर्फ सिंपल से याद रखना है, रिटर्न कीवर्ड मस्ट बी द लास्ट लाइन ऑफ द कोड. उसके नीचे का कोड अनरीचेबल कोड होता है. रिटर्न कैन ओनली बी डन फॉर अ सिंगल वैल्यू. आप एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है. राइट, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. नाउ हाउ टू कॉल इट? सो राइट नाउ आई डू नॉट हैव टू स्कैन द डेटा अगेन, बिकॉज अगर स्कैन करते भी तो फंक्शन तो रिसीव कर नहीं रहा है और फंक्शन तो इंटरनली स्कैन कर रहा है डेटा. तो अपने को सिर्फ यहाँ पे कॉल करना है. इफ आई कॉल लाइक दिस, right, and if I just do like this, return 0, because at the end of the main we generally return 0. What is 0? Integer. So that's why you can see the return type is int. And if we execute the code, now just think for a second what will happen. आउटपुट आएगा, सही आएगा, गलत आएगा, नहीं आएगा. So in this case the code will run perfectly. There will be no errors, no warnings, but at the same time there will be no output as well. Now why we are not seeing the output? Right, because see, whenever you start the main, कंट्रोल यहाँ आएगा, ये फंक्शन का कॉलिंग है, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा फंक्शन पे, फंक्शन में वेरिएबल्स बनाएगा, तीनों वैल्यू स्कैन करेगा, कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद फंक्शन ने रिटर्न कर दिया. रिटर्न करना मतलब वापस देना. तो SI में जो भी आउटपुट स्टोर था, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो भी था, वो रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया. किसको? तो फंक्शन किसको रिटर्न करता है? जहाँ से वो कॉल होता है वैल्यू उसी को देता है. तो कॉल कहाँ से हुआ है? फंक्शन फ्रॉम द मेन, इस लाइन पे कॉल हुआ है. तो ये जो SI का वैल्यू है वो इस लाइन पे वापस आ जाएगा. अब वो आउटपुट आ गया, बट हैव वी रिसीव्ड इट? नो. हैव वी प्रिंटेड इट? नो.
then can we see the output? Definitely no. तो फंक्शन ने रिटर्न तो किया, मेन के पास आया भी, बट मेन ने उसको ना प्रिंट किया ना रिसीव किया ना कोई उस पर ऑपरेशन किया, तो आउटपुट दिखेगा क्या? सो यू विल नॉट सी द एनी आउटपुट. सो देन हाउ वी कैन सी दिस आउटपुट? सो वी हैव टू रिसीव इट. अब फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? फ्लोट. तो रिसीव भी किस में करोगे? फ्लोट में. सो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल अगेन, जस्ट मेक श्योर दैट ये जो एस आई है और ये एस आई है सिर्फ नाम सेम है, द मेमोरीज विल बी डिफरेंट. This SI do not have anything related to this SI, right? Clear? So just remember one thing, that whatever name we have specified here SI, जरूरी नहीं है कि वही नाम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, राइट? मैंने यहाँ पे सेम रखा है, यहाँ पे भी सेम रखा है, यहाँ पे फंक्शन में एस आई रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ पे एस आई लिखा है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, इट डजेंट मैटर, बोथ द मेमोरीज विल बी डिफरेंट. जैसे अपने लास्ट वीडियो में देखा था, रिसीविंग पैरामीटर का नाम सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, सेम रूल एप्लीकेबल है रिटर्न टाइप पे भी. यू कैन कीप द नेम सेम, यू कैन कीप द नेम डिफरेंट, राइट? सो एस आई. तो फंक्शन जो रिटर्न करता है उसी टाइप में अपन रिसीव करते हैं. फंक्शन फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट में, फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो कैरेक्टर में, फंक्शन अगर डबल रिटर्न कर रहा है तो डबल में. लेकिन अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो दिस लाइन विल बी अ सिंटैक्स एरर. व्हाट आई हैव एनसर्कल्ड, ये एरर दे देगा अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो. बट अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो अपन रिसीव कर सकते हैं. क्या अभी आउटपुट आएगा क्या? नो, बिकॉज वी हैव नॉट प्रिंटेड इट येट, सो वी हैव टू प्रिंट इट एज वेल. सो प्रिंट एफ simple interest is percentage f and si. Now if you run the code will be started from main. It will create si, a variable with the name si. Then it will first call the function will get executed, the function will scan the data, it will calculate the output, and the output will be returned. Where it will get returned? From where the simple interest is called. From where the simple interest called, in this case from the main. So main के बाद simple interest आ जाएगा, it will get copied into si, and on the next line the output will be printed, and then return 0, it means end of the code. Now how to do the declaration? So the declaration, as we have mentioned, the first line of the function is the declaration. So it will be float simple interest and the bracket semicolon. So this will be the declaration. So this is your declaration, this is your calling, and this is your definition. How to write down the code? So first we have to write down the declaration, then we write down the function, and at the third step we write down the on second step we write down the main, and on the third step we use the फंक्शन. बट क्या जम्बलिंग कर सकते हैं क्या? यस, बिकॉज कोड कंपाइल कैसे होता है? लाइन बाय लाइन. तो पहले ये लाइन कंपाइल होगा, ये लाइन कंपाइल होगा तो we know what the simple interest is, what is the spelling, what is the name of the function, what the function will receive, what the function return. So compiler को ये लाइन से पता है कि क्या फंक्शन का नाम है, क्या रिटर्न कर रहा है. So when this line will get compiled inside the main, the compiler will not generate any error or warnings, right? But if you ignore the first step, in that case compiler will start the compilation from main, because अपने main पहले लिखा है. बट ये जब लाइन चलेगा सिंपल इंटरेस्ट ब्रैकेट, सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कंपाइलर को पता है क्या? नो. सो इट विल start generating the warnings, not exactly error, because C में errors नहीं आते, but yes, warnings will face, right? So this is your third type of function, that is a function which do not accept anything but which will return the data, right? In the next upcoming video we have fourth type as well, in which the function will return the data, as well as the function will accept the data, right? And once we have that in the next session, once we have the discussion about the fourth type, we will also discuss that why these four types are there, how these four types will be used, in which scenario we use which one, right? तो चार लैंग्वेज ने दिए, बट चार ही क्यों दिए? एक भी तो दे सकते थे, काम तो सब सेम ही कर रहे हैं. तो कौन सा सी फंक्शन किस जगह यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है,
कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ फिट होगा, राइट, और इन चारों में कौन से को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर एक काम सभी से हो सकता है तो विच वी विल pick up, right? So that discussions will be done in the next upcoming session. Okay, for anything related to the function related video, if you have anything you please mention in the comments, or if you want some revision, so there are videos created on functions, so you can visit that as well. Cool. Okay, thank you.